Okay students, so now next move for construction of next financial statement, that is balance sheet. As we already have discussed in our previous class, that balance sheet describes the financial position of the business at the end of accounting period. We also have discussed regarding the structure of the balance sheet, the assets shown on the left hand side and the debt and equity shown on the right hand side, and we have to prove the left hand side is equal to right hand side. Now let's start. Before we start to prepare a balance sheet, let me remind you again the yellow highlighted area. The yellow highlighted area is showing the information given in an adjusting data at the end of accounting period. The adjusting data or the results of adjusting data shown on both sides of accounting equation, or it impacts on both sides of accounting equation. And the other than the additional data, the information given in the pre-closing trial balance directly copied from trial balance to balance sheet. Now for example, cash is our current asset. We are just copying the amount of cash from trial balance, that is rupees 1,50,000. Similarly, we are copying the amount of account receivable 90,000 from our trial balance. Here, the yellow highlighted area, the inventory closing rupees 30,000, I am copying from the additional data or adjusting data. You can also write here directly rupees 30,000, and it is impacting on two sides. On the one side, it is also shown in income statement, and on the other side we are writing here on the balance sheet. So it is impacting on two sides of accounting equation. The next is the office supplies. Again, I am copying directly from my trial balance rupees 10,000. The prepaid insurance, the amount paid in advance to an insurance company, is equal to rupees 40,000. Why I am directly copying from the trial balance? Because there are no information related to office supplies, prepaid insurance or account receivable given in the adjusting data. In this way, we can make a sum of all current assets. Okay, the sum of current assets is 320,000. Now, after completing the total current assets, now let's move towards the fixed assets. As you can see, the amount of office equipment is given in the trial balance, that is rupees 400,000. It is a historical cost. Similarly, the amount of accumulated depreciation is also given in our trial balance, that is rupees 100,000. I am subtracting from the cost of office equipment rupees 4,00,000 the accumulated depreciation, that is rupees 100,000, and we got the balance or the book value of office equipment rupees 300,000. Similarly, furniture is also our fixed asset. I am just copying the amount of furniture from the trial balance, that is 200,000. In this way, now we can sum up the amount of fixed assets. In this way, we can calculate now the amount of total current asset and plus fixed asset. So it is 8,20,000. So total amount of assets is equal to 8,20,000. And let me repeat it. हमने सब बैलेंस शीट जब हमें कंस्ट्रक्ट करनी थी तो उसमें सबसे पहले हमने करंट एसेट से स्टार्ट लिया, और इससे पहले कि हम बैलेंस शीट बनाते हैं हमने इस बात को ध्यान में रखा कि वो इन्फॉर्मेशन जो एडिशनल डेटा में गिवन है, डेटा फॉर एडजस्टमेंट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका दो साइड पे इम्पैक्ट पड़ता है, हमें भूलना नहीं है. हमने इन्वेंट्री के 30,000 इनकम स्टेटमेंट में तो लिखे थे, लेकिन अब हमें इसका आंसर बैलेंस शीट में भी लिखना था. इसके अलावा और जितने भी आइटम थे उनको मैंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया है. कैश 1,50,000 था ट्रायल बैलेंस में, अकाउंट रिसीवेबल 90,000 था, ऑफिस सप्लाईज 10,000 था,
और प्रीपेड इंश्योरेंस 40,000 था। इस तरह ये सारे मेरे करंट एसेट का टोटल आ गया 3,20,000। इसके बाद में फिक्स एसेट्स की तरफ गया, मैंने देखा इक्विपमेंट की कीमत 4 लाख रुपए और आज की डेट तक जो हम इक्विपमेंट को यूज कर चुके हैं अपने अंदाजे के मुताबिक वो 1 लाख रुपए। तो 4 लाख में से जब 1 लाख रुपए हमने 4 लाख का खरीदा है ऑफिस इक्विपमेंट, 1 लाख रुपए का हम यूज कर चुके हैं, तो इसका जो बैलेंस आ गया, जिसकी बुक वैल्यू आ गई, वो 3 लाख रुपए आ गई। इसके बाद मैंने देखा एक और फिक्स एसेट है जो कि जिसकी इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में गिवन है, वो ऑफिस फर्नीचर है और जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए दी हुई है। तो इस तरह ऑफिस इक्विपमेंट और फर्नीचर दोनों की वैल्यू को टोटल मैंने कर दिया, तो फिक्स एसेट का मेरा आंसर आ गया 5 लाख। ये मेरे फिक्स एसेट का आंसर है 5 लाख रुपए। इसमें मैंने ऐड कर दिया इस 5 लाख रुपए में, जो कि फिक्स एसेट का आंसर है, इसमें मैंने करंट एसेट के आंसर को टोटल कर दिया 3,20,000 को और मेरा आंसर हो गया टोटल एसेट्स का 8,20,000। To the right side of accounting equation, that is liability plus capital or debt plus equity. So we start from current liabilities or current debt. यहाँ we can see the amount of accounts payable is given in the trial balance, that is rupees 40,000. I am just copying. Similarly, the amount of notes payable is also given in the trial balance. Again, I am just copying rupees 80,000. Thereafter, there are 4 other liabilities. The one is interest payable, the other is taxes payable, and similarly the cash dividend and the stock dividend. All 4 are yellow highlighted liabilities. It means I have written these answer of all these 4 liabilities from the adjusting data or information. Now let's make the total of our current liabilities. It is 2,50,000. The next is the long-term liability or long-term debt. It's bonds payable. Again, the value of bonds payable given in the pre-closing trial balance, that is 2,50,000. Bonds payable is a risk-free investment made by the bondholders to a company. Now we get the total amount of debt, that is current liability, and the long-term liability or fixed liability or fixed debt. So we get the result total debt 500,500. 5,500,000 रुपए का आंसर आ गया। Now next is the equity side. The paid up capital, the amount of paid up capital is given in our trial balance. We are just copying here. The amount of retained earning, remember the amount or the result of retained earning you cannot write from the trial balance. The balance, since the balance sheet is always prepared at the end of accounting period, so you have to write the result of retained earning from the statement of retained earning. You can see we have constructed a statement of retained earning and we calculated retained earning at end rupees 1,69,500. So I am just copying from the statement of owner equity or statement of retained earning the amount of retained earning at end. Now we are making total of paid up capital and the retained earning at end. In this way we got the total of equity side. Now the right hand side, debt plus equity, if you make the total of your debt and your equity, so you get the result of right hand side of accounting equation. We can see both sides, the left hand side total assets are equal to total debt plus equity, right hand side of accounting equation. Hence in this way we have calculated the balance sheet. मैं ज़रा इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो राइट साइड ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसमें सबसे पहले हमने लायबिलिटीज़ को कैलकुलेट करना शुरू किया। करंट लायबिलिटीज़, अकाउंट्स पेएबल और नोट्स पेएबल जो हमारे थे, ये हमारे पास पहले से मौजूद थे। इसको मैंने ट्रायल बैलेंस से एज इट इज़ कॉपी कर लिया था। इन दोनों लायबिलिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि ये लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, इन दोनों का आंसर मैंने ट्रायल बैलेंस से एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया। इसके बाद ये जो नेक्स्ट 4 लायबिलिटीज़ हैं जो कि येलो हाईलाइटेड है,
हमें पता होना चाहिए कि इनकी इंफॉर्मेशन हमें एडजस्टिंग डेटा से हमने ली थी, और एडजस्टिंग डेटा में जो भी इंफॉर्मेशन हो उसके आंसर दो जगहों पे लिखे जाते हैं। एक जगह पर मैं पहले ही लिख चुका था इनका आंसर, जैसे इंटरेस्ट पेएबल और टैक्सेस पेएबल मैंने इनकम स्टेटमेंट में इनका आंसर लिखा है, और इसी तरह डिविडेंड जो है, कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड, इनके आंसर में स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न एंडिंग में पहले ही लिख चुका हूँ। तो एक साइड पर इसका आंसर मैं लिख चुका था, अब दूसरी साइड पर मैंने बैलेंस शीट में भी इसका आंसर लिख दिया है। इस तरह मेरे पास टोटल लायबिलिटी हो गई 2,50,500 की। बॉन्ड्स पेएबल फिक्स लायबिलिटी हमारे पास एक ही है, और ट्रायल बैलेंस से मैंने उसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया है, 2.5 लाख रुपए से बॉन्ड्स पेएबल फिक्स लायबिलिटी। इस तरह मेरी टोटल लायबिलिटी हो गई 5,05,000 रुपए की। करंट और फिक्स को मैंने ऐड कर दिया, सो टोटल डेट इज इक्वल टू 500,500। इसके बाद हम इक्विटी साइड पर आ जाते हैं। इक्विटी में हमने देखा पेड अप कैपिटल ट्रायल बैलेंस में गिवन था, उसको मैंने कॉपी कर दिया। हमेशा याद रखना, जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट इज कंस्ट्रक्टेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, इसलिए हमें ये तमाम बैलेंसेस जो भी हमने बैलेंस शीट में लिखे हैं ये सब एंडिंग बैलेंस होते हैं या क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। आप देख सकते हैं इन्वेंट्री का भी मैंने क्लोजिंग बैलेंस लिखा है, तो मुझे रिटेन एंडिंग का भी क्लोजिंग बैलेंस लिखना होगा, जो कि मैंने कैलकुलेट किया था स्टेटमेंट ऑफ रिटेन एंडिंग में 1,69,500। यहाँ से मैंने इसको बिल्कुल कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और इसको कॉपी करने के बाद मैंने देखा मेरी टोटल इक्विटी का आंसर आ गया है 3,19,500। इसमें पेड अप कैपिटल को और मैंने रिटेन अर्निंग एट एंड को प्लस कर दिया। इस तरह इक्विटी का आंसर भी आ गया और डेट का आंसर भी आ गया, और दोनों को अगर आप प्लस करें तो टोटल डेट प्लस इक्विटी का आंसर आपका 8,20,000 हो रहा है, जो कि एसेट्स के इक्वल है। और इस तरह ये साबित हो गया, हमने इसको प्रूफ कर दिया है कि एसेट्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। हमारी सेकंड एग्जाम्पल भी इस तरह कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव